वेलकम टू पाकिस्तान अकाउंटिंग के एनर्जी इंटरव्यू सीरीज में जहां हम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट से सीखेंगे पाकिस्तान के करंट एनर्जी चैलेंजेस के हवाले से। आज के 11th एपिसोड में हम बात करेंगे मोहसिन अली मंगी से, जो पीएसओ में चीफ स्ट्रेटजी एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं। पीएसओ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनी है और पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर की सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर है। मोहसिन का पाकिस्तान एनर्जी और फाइनेंस सेक्टर में 25 साल का एक्सपीरियंस है, जिसके दौरान उन्होंने पाकिस्तान की और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज इंक्लूडिंग क्रेडिट स्विस, एंग्रो और हपको में काम किया है। आज हम उनसे जानेंगे कि पीएसओ का एनर्जी सेक्टर में क्या रोल है, पीएसओ एनर्जी ट्रांजिशन के लिए कैसे प्रिपेयर कर रहा है, सर्कुलर डेट का पीएसओ पे क्या इम्पैक्ट है और पीएसओ का विजन क्या है। My first job was with PSO, and that was the time that PSO was being restructured for privatization. And I stayed around for 1.5 years. Then there were two investment banks in Pakistan back then. One was Indus Vicar, other one was UBS. I worked for both of them. So I joined Angro. I was their business development analyst. So the most of the diversification projects that you see today were the time they were planned back in 2003 and 5. And be that the fertilizer expansion, be that the Anglo Foods project, Alpus, as you know today, and Anglo Polymer expansion, Kadipur. So all those projects I worked on them. And then I went back to investment banking. I was with NIB, and then I joined Credit Suisse. I came back to Pakistan somewhere in the beginning of 2010, and I was with Engro for about 8 years. I worked more or less in every possible subsidiary of Engro. Then I joined Hapco. I was the lead transaction for acquisition of ENI assets in Pakistan by Hapco. About 3.5 years ago, I joined PSO as a chief of strategy and technology officer. And there are a lot of things that we have done since then. A few things that people know about, a few things people do not know about it. But in a nutshell, is that we are following a very detailed transformation strategy right now. Very few people remember, but in 1971, when we went to war, a lot of oil marketing companies, which were mostly foreign back then, they refused to bring fuel to Pakistan. And then subsequently, a Petroleum Act 1974 was passed, and it was decided there should be a national company which will ensure the keeping the value chain in Pakistan intact. तो उस जमाने में later on in 1977, तीन companies के merger से the PSO was formed. So those three companies were the State Oil, the Dawood Petroleum, and Esso, which was leaving Pakistan back then. PSO predominantly is oil marketing companies. We have about 3,500 retail outlets, and we are the only company in this country who actually believes all the citizens of Pakistan have equal right to access to energy. And that's why we are the only company who have petrol plants right from the south of the country to all the way to the Swiss border. And we have 3,500 retail outlets, and we are expanding it further. Throughout the country, there are 27 storage facilities. And we are invested into Pakistan Refinery, which is going through major expansion. We own 64% of it. We are in negotiation with certain international investors for a large size 325,000 barrels refinery in Pakistan. We were been talking to Aramco about it. Everyone knows about it, I think. इसी तरह से हम पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा करना चाह रहे हैं। हम अब अगला जो है इन पार्टनरशिप विद एफडब्ल्यू, वी आर एक्सटेंडिंग द पाइपलाइन फ्रॉम फैसलाबाद टू ऑल द वे टू फकीराबाद, ताकि आपका नॉर्थ भी जो है वो पाइपलाइन नेटवर्क पे कनेक्ट कर सके। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो केसो सिंगल लार्जेस्ट इंपोर्टर है पाकिस्तान का। वी आर द लार्जेस्ट फॉरेन करेंसी डीलर। वी आर एनर्जी इंपोर्ट्स जो हैं पाकिस्तान की, आई थिंक प्रेडोमिनेंटली is PSO. Almost 80% of the market share. अगर हम LNG को भी मिला दें, this PSO. Then we are about 5% of Pakistan's GDP, 5 to 8%, depending again on international oil prices. And our revenue is close to 5 trillion rupees. Our profitability numbers vary depending on the movement of international prices, but last year we closed at around 16 billion. उससे पिछले साल we were about 85 billion. So
it's by far the largest company in Pakistan in terms of revenue, in terms of earnings, in terms of asset size, presence everywhere. अब आपको मसला आ रहा है, वो प्रीडोमिनेटली आ रहा है डिफरेंशियल प्राइसिंग की वजह से बिटवीन एलएनजी की कॉस्ट एंड द प्राइस एट विच यू रिकवर इट फ्रॉम द कंज्यूमर. अब आपका एलएनजी का जो हमें दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से जो पीएस इंपोर्ट करता है, वो हमें एवरेज कॉस्ट तकरीबन $10 से $11 पर MMBTU की पड़ती है. जो SNGPL है, विच इज द मेन बायर जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, वो जो अपने कंज्यूमर्स को सेल करता है या वो डाइवर्जन करता है, बिकॉज आइडिया वाज दैट कि एलएनजी के कार्गोज आएंगे, आपके एलएनजी पावर प्लांट से कंज्यूम करेंगे और टैरिफ से पैसे रिकवर हो जाएंगे. सो दैट कुड नॉट बी डन बिकॉज ना तो आपकी पावर डिमांड कंजम्पशन पैटर्न उस तरह से चला. दूसरा ये था कि उसके अंदर आपका पावर प्लांट हर वक्त 100% अवेलेबल नहीं रह सकता, एंड देन आपका कंजम्पशन पैटर्न जो है वो वेरी करता है बहुत शदीद. Summers के अंदर वो it's higher and towards the winter it goes down as low as 5,000 megawatts. लेकिन आपने पीछे से एलएनजी तो खरीदना ही खरीदना है, तो जब वो एलएनजी आप खरीद के लेकर आ रहे हैं तो वो आप उसे डाइवर्ट करते हैं टू सर्टेन इंडस्ट्रीज एंड द कंज्यूमर. वो उनको आप जिस प्राइस पे बेचते हैं वो प्राइस $2-3-4 के करीब है. तो जो $6 से $7 ऑन अ सर्टेन परसेंटेज जो कि आपने डाइवर्जन की है, वो आपको कभी कॉस्ट का कोई रिकवरी मैकेनिज्म नहीं है. वो पहले गवर्नमेंट बजट के हिसाब से आपको सब्सिडी कॉस्ट में रिकवर करके देती थी, एंड विद द कांस्टेंट द रिसोर्सेज नो लॉन्गर पॉसिबल. तो वो जो है वो बढ़ के आपका होते होते इस वक्त जो डेट पीएसओ का है इस वक्त सर्कुलर डेट पोर्शन दैट हैज टच्ड अबाउट 870 बिलियन रुपीस. पीएसओ को मैनेज इस तरह से करता है कि पीएसओ के जो दो प्रोडक्ट्स हैं, विच इज द गैसोलीन एंड गैस ऑयल, पेट्रोल एंड डीजल जिसे आप जबान में कहते हैं, वो दोनों जो हैं वो कैश प्रोडक्ट्स हैं और उसके ऊपर हम कैश पॉजिटिव भी हैं. और पीएसओ का जो दिन का रेवेन्यू है दैट वो वेरी करता है बिटवीन 5 अरब रुपए रोजाना से अप टू 12 अरब रुपए रोजाना. और वो क्योंकि हम वो कैश का बिजनेस है तो हम उसके बेस पे हम इस बिजनेस को अपना सस्टेन करते हैं, जो कि लॉस मेकिंग बिजनेस है. तो अगर आप पीएसओ के बुक्स जो आपने देखे हैं या लास्ट ईयर का प्रॉफिट देखे हैं तो उसके अंदर आपको 16 अरब का प्रॉफिट नजर आ रहा है, लेकिन अगर मेरे पास एलएनजी का बिजनेस ना होता तो हमारा प्रॉफिट 25-26 अरब रुपया होता. जो पेस ऑफ ट्रांजिशन है जिसे हम हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं वो बेइंतहा होगी. सो इफ वी हैव, दूसरी चीज मैंने ये सीखी कि व्हाटएवर यू सी 10 years after you should prepare for it 10 years before. एंड अब इसी मॉड्यूल के ऊपर हम पीएसओ की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं. तो हमने वी आर एक्चुअली ये जो हमने दो वर्टिकल्स खड़े किए हैं, वन इज रिन्यूएबल एनर्जी एंड वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर अ लो कॉस्ट पावर जनरेशन because we believe the consumers will switch from the primary energy source of fossil fuel to electron and preferably blue or green electron. And the second thing is हमने पीएसओ की स्ट्रेंथ्स को जो है रिव्यू किया और हमें 3 पीएसओ की स्ट्रेंथ्स नजर आती हैं which will help us transit quickly. देखिए पीएसओ का जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है उसकी कैश जनरेशन. So I can invest today for my future so that I'm ready when the things change, that PSO ready to face the transition which is going to come their way. Second one is I have a very strong retail and real estate presence throughout the country. And third one is that everyone who has used PSO facility or a PSO product is a part of a broader community which I can tie in, and I have to build the business models to keep them together and keep engaging them. तो हमने एक रिन्यूएबल एसेट कंपनी बनाई है एंड करंटली वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट ऑल आवर एसेट्स इनटू रिन्यूएबल एनर्जी, बट वी विल नॉट स्टॉप देयर. So we will then we have certain lands on which we are working on hybrid power plants. We will be entering into mini grids and to B2B transactions so that हम molecule से electron की तरफ transit करना शुरू करते हैं and that in a cost effective manner. सेकेंडली सर्कुलर डेट पे हमने जो डिस्कशन किया था तो हम गवर्नमेंट से ये कह रहे हैं कि आप हमारे 800 अरब रुपए तो नहीं दे सकते, इट्स अ नॉन प्रोडक्टिव रिसीवेबल एसेट ऑन आवर बुक्स, उसको आप स्वैप कर दें सम विद सम वैल्यू एसेट. सो पीएसओ इज लुकिंग टू गेट इनटू पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस आल्सो, सो दैट आपका जो भी कल को ट्रांजिशन आएगी उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रिड्स विल स्टिल प्ले अ रोल.
The third thing that we have done recently, we signed a contract with BYD, and we will be signing a lot of contracts and Hubco, and we will be signing other contracts as well. कि हम जो है अपना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बोथ फॉर टू व्हीलर्स बेस्ड ऑन शॉपिंग मॉडल एंड फॉर द ईवी चार्जिंग अभी से बनाना शुरू कर दें, और उसको हम टाइम कर दें अपने कैश बेस्ड फिनटेक प्रोडक्ट्स से, so they can avail the financing, they can transact on it, they can book on it. मैं इसको आपको 4 बुलेट्स में बताता हूँ. वन इज द ऑयल एंड गैस. उसके अंदर हम इंटीग्रेट हो जाएं all the way down, so I should be able to deliver the energy to the consumer at the lowest possible cost. ठीक है. And for that we are investing in the pipelines, in the refineries. And we are in the process of setting up our own trading company in Singapore. दूसरा, we see the transition happening. And that's why, and we clearly see कि जो fossil fuel से आप power पे जा रहे हैं consumer factor. So we want to become a significant player in the power segment. लेकिन जिस level पे power transit हो रहा है ना, तो उसमें certainty के साथ कहना बड़ा मुश्किल है कि सब कुछ EV chargers हो जाएंगे या grids खत्म हो जाएंगी या micro grids बन जाएंगी. तो but whatever that scenario comes in, I need to put in infrastructure, technical, commercial resources and technology in place so that I'm ready to face and I'm part of that transition rather than the victim of that transition. The third thing is हमने 2 businesses launch कर दिए formally in the digital space. So one is an e-commerce platform, other is our fintech company. So fintech company will cash on our current revenue generation, and we will try to generate a banking multiple with the product and services and the benefits that we can pass on to the consumer. The e-commerce platform will connect every single individual from all the way north to say in Gwadar and Tharparkar. And the third thing is, to our corporate VC, we want to invest into technologies which will help us achieve all of the first 3 goals that I just mentioned.